University of Sciences, Raichur, Karnataka, Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya, Bilaspur, Chhattisgarh, and Farmers Park, Hyderabad, Telangana. I cordially welcome you all to this 21 days winter school training on fostering environmental sustainability through food security, agriculture, and modern sciences innovation. Vital Biotech is India's leading publication, research, and training institute whose goal is to tackle the world's most pressing problems related to food and agriculture. Whereas the Agricultural Forum for Technical Education of Farming Society Kota serves as a spherical between the network of rural communities in India and other stakeholders such as government development organization and corporate entities. Indira Gandhi Krishi Vishwavidyalaya, IGKV Raipur, Chhattisgarh was established on January 20, 1987. IGKV has a primary mandate to provide education, conduct research, and offer extension services in the field of agriculture related areas. Its work plays a vital role in improving agricultural practices and the lives of farmers in Chhattisgarh. University of Agricultural Sciences, Raichur, came into existence on 22nd November 2008 through bifurcation from USA Dharwad. It is the third agricultural university established in state after Bengaluru and Dharwad in Karnataka. With the establishment of US Dharwad in 1986, Raichur still had the privilege of being the second largest campus and a major hub of education in this region. Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya, established in June 2012, has nearly 95 government and private colleges affiliated in the 4 districts of Chhattisgarh state, which together constitute the jurisdiction of ABVV. The university plans to develop a strategy for enhancing the range of educational approaches and the use of technology. As a part of this approach, the university plans to start classrooms into state-of-the-art ones, enabling teachers to teach using a wide variety of media. Farmers Park is a platform committed to empowering organic and natural farmers across India by providing farm advisory services, free soil testing, and marketing support. It aims to promote sustainable farming practices, helping farmers maximize their yield while protecting the environment. Through their services, they strive to create a strong, eco-conscious agricultural community nationwide. This evening, we are indeed fortunate to have such a honorable dignitary among us. It is my privilege to introduce Dr. Dhammaprakash Pandhari Wankhede, Senior Scientist at the Division of Genomic Resources, ICAR, National Bureau of Plant Genetic Resources, New Delhi. Sir has specialized in genomic resource generation and genetic trait analysis in pulses and oilseeds. He did his MSc in agriculture with a specialization in genetics and plant breeding from Acharya Anjiranga Agricultural University, Hyderabad in 2005, and PhD in plant molecular biology and biotechnology from National Institute of Plant Genome Research, Jawaharlal Nehru University, New Delhi in 2011, which also has to be the #1 university in India. With over 14 years of extensive research experience, Sir has held various significant roles, including as a postdoctoral researcher at the National Institute of Plant Genome Research, as scientist from 2013 to 2022, and currently as a senior scientist at ICR National Bureau of Plant Genetic Resources since 2022. The expertise of Sir encompasses genome analysis, bioinformatics, association genetics, and structural and functional genomics. Sir prime focuses are on advanced area of next generation sequencing and association mapping for crops like linseed, black gram, and cowpea, along with DNA fingerprinting for germ plasma. Sir has authored over 60 publications on genomic studies and crop improvement and contributed to books on plant genetics and stress resistance. Dr. Wankhede has been recognized prestigious RB research for it was
covered that in such a time. With that respect, I warmly welcome you our school virtual to you. Over to you, sir. Okay. Thank you, Kumari Shushmita, for very elaborate introduction. And thank you, Dr. Jitendra, for giving me this opportunity to make a presentation here. And it's nice to see the good number of participants here. Okay, so I'll share my screen. So is it visible to all of you? Yes, sir, visible. Okay, okay. All right. Today, I'll be discussing on a topic which is can be applied in different biological systems like the plant systems and the animal systems. I came to know that there are few trainees here from the animal system also. So this will help them also. So to save the bandwidth, I will close my video here. And all right. So this is the crop I am taking here to showcase the research work what we had done to explain this technology is the linseed, which is also known as flaxseed, flax, and which is now becoming very popular because of various nutritional nutraceuticals compound. So, Excuse me, sir. So, yes, yes. Sorry, sir, to disturb you, but can you please say it in English and Hindi? Like, can you please use Okay. bilingual? Acha. It should be bilingual. Yes, sir. Yes, sir. All right, all right. और या फिर हिंदी में ही करूँ बात या सेम चीज मतलब मिक्स चलेगा सर मिक्स थोड़ा ओके ओके ऑल राइट ओके थैंक यू ऑल राइट सो जैसे फ्लैक्स है लिंसीड है हिंदी में अलसी कहते हैं इस क्रॉप को तो इसमें जो हमारा काम हुआ है उस काम के बेसिस पे ये जीनोम वाइड एसोसिएशन स्टडी ये जो टेक्निक है और उसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि जैसे कोई कॉम्प्लेक्स ट्रेट है जैसे इल्ड जो है वो काफी कॉम्प्लेक्स ट्रेट होता है किसी एक जीन से गवर्न नहीं होता है फ्लावरिंग है दैट इज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स ट्रेट सीड वेट है समटाइम प्लांट हाइट है तो ये सारे जो होते हैं कॉम्प्लेक्स ट्रेट होते हैं क्वांटिटेटिव ट्रेट होते हैं किसी एक या थोड़े से जीन से नहीं काफी ज्यादा नंबर ऑफ जीन से ये गवर्न होते हैं काफी बड़ा इंटरेक्शन होता है तो ऐसे ट्रेड्स को अगर हम लोग इसका जेनेटिक रेगुलेशन कैसे होगा ये अगर हमें देखना है तो वी हैव टू यूज देयर आर सेवरल अप्रोचेस सो आई विल बी कवरिंग this genome-wide association study in this work and using the example of our own research. Okay. So सबसे पहली बात है कि मतलब in biology what is the main function actually we try to understand what is the genetic basis of any trait जैसे कि मेंडल ने किया था he tried to understand the genetic basis of different traits in garden pea like flower color pot shape seed size and all these are all complex traits okay some traits are qualitative traits in that so the main function and the question in biology is always identifying what is the function of certain gene और कि कोई ट्रेट के पीछे कौन सा जीन है व्हाट आर द जीन्स अंडरलाइंग सर्टेन ट्रेट्स सो दिस इज द मेन बायोलॉजिकल क्वेश्चन सो व्हाई डू वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द जीन और किसी ट्रेट के पीछे कौन से जीन्स है क्यों करते हैं हम लोग ये काम सारा ये हम लोग इसलिए करते हैं कि एक तो नॉर्मल है कि जैसे हमारा अंडरस्टैंडिंग बढ़े जेनेटिक्स का नॉलेज बढ़े जैसे बेंडल ने किया था हिज एम वाज टू अंडरस्टैंड कि बायोलॉजी में प्लांट्स में किस तरह से ट्रेट गवर्न होते हैं जीन्स कैसे गवर्न करते हैं ट्रेट इसके अलावा एक्चुअली इसका यूज होता है क्रॉप इम्प्रूवमेंट में
जैसे अगर हम जानेंगे कि किसी पर्टिकुलर जीन का ये फंक्शन है या इम्पोर्टेंट ट्रेट है जिसको हमें, जैसे सीड वेट है या फ्लावरिंग टाइम है, इसको हमें अर्ली करना है या लेट करना है, तो इसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। ऐसे रिसोर्सेस आइडेंटिफाई करके हम उस ट्रेड को किसी पॉपुलर वैरायटी में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें होती है। इसके लिए हमें डिफरेंट अप्रोचेस हम लोग यूज करते हैं साइंस में। तो जैसे फॉरवर्ड जेनेटिक्स एक अप्रोच जो होता था, जिसमें कि जीन्स को म्यूटेट कर देते हैं, एंड म्यूटेट करने के बाद फिनोटाइपिंग करते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि क्या इफेक्ट हुआ उसका। तो म्यूटाजेनेसिस जनरली पहले जो होता था वो रैंडम होता था। तो वाइल्ड टाइप जो नॉर्मल प्लांट है उसके अलावा जो भी फिनोटाइप दिखता है उसको कैरेक्टराइज करते थे, मैप करते थे, और पता करते थे कि क्या जीन है। बट ये काफी टाइम कंज्यूमिंग होता था, और इसमें रैंडमनेस था। हमें जो चीज चाहिए वो चीज नहीं हमें कर सकते हैं। अभी तो जीनोम एडिटिंग आया है, बट दैट इज नॉट द टॉपिक ऑफ अवर डिस्कशन टुडे। तो तो दूसरा क्या ये होता है, एक तो बायपेरेंटल मैपिंग होता है, जैसे क्यूटियल मैपिंग होता है। इसमें क्या करते हैं, जैसे कॉन्ट्रास्टिंग प्लांट्स रहेंगे किसी ट्रेट के, अर्ली फ्लावरिंग हो गया, लेट फ्लावरिंग हो गया, या लो सीड वेट हो गया, हाई सीड वेट हो गया, प्लांट हाइट हो गया, इन कॉन्ट्रास्टिंग पेरेंट्स को क्रॉस करेंगे, F1 रेस करेंगे, फिर उसका नेक्स्ट सेग्रीगेटिंग जनरेशन रेस करेंगे, F2 से आगे मैपिंग हम लोग कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, जो जीन्स रहेंगे उसमें, मतलब जो जीनोम में जब हम क्रॉसिंग करेंगे, जब रिकॉम्बिनेशन होगा, तो शफलिंग ऑफ क्रोमोसोम्स हो, क्रोमोसोमल सेगमेंट्स होगा। और शफलिंग होने से क्या होगा, जो शफलिंग होने से और सेग्रीगेशन होने से हमें जो कोई मार्कर एसोसिएट है किसी पर्टिकुलर ट्रेट के साथ, क्लोजली लिंक्ड है रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे, उस बेसिस पे जहां जहां वो क्लोजली लिंक मार्कर रहेगा वहां वहां वो ट्रेट जाएगा। तो ये होता था बायपेरेंटल मैपिंग, जिसे क्यूटीएल मैपिंग ही कहते हैं। बट इसमें हम लोग जैसे देखते हैं 2 ही पेरेंट यूज करते हैं मैक्सिमम। अभी और टेक्निक आए हैं, ज्यादा से ज्यादा 4, ज्यादा से ज्यादा 8, इतने पेरेंट्स यूज करते हैं, मैजिक पॉपुलेशन जिसे कहते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेशन इवेंट जो है वो कम रहेंगे। ठीक है। तो इसलिए क्यूटीएल का रिजोल्यूशन, जो जीन कॉजिंग कॉजल जीन है किसी ट्रेट का, तो वो मिलने के चांसेस कम रहेंगे, या उसके पास नहीं रहेगा, बहुत बड़ा एरिया रहेगा, जो कि हम कहेंगे कि हाँ ये रीजन है जिसमें कि आपका जीन हो सकता है। तो ऐसा क्यूटीएल आइडेंटिफाई करने के बाद हमें फाइन मैपिंग करना पड़ता है, जिससे कि क्यूटीएल कहाँ है, जीन कहाँ है, वो पता चले। तो ये एक अप्रोच है, अच्छा अप्रोच है, काफी यूज होता है, यूज करना भी चाहिए। और एक अप्रोच है जीनोम वाइड एसोसिएशन स्टडीज। इसमें जो मैपिंग पॉपुलेशन होगा, जैसे ये बायपेरेंटल मैपिंग में मैपिंग पॉपुलेशन जो होगा, वो जो होगा सेग्रीगेटिंग जनरेशन बाद में जब फिक्स हो जाएगी, या सबसे पहले F2 में भी हम लोग कर सकते हैं, बट दैट इज नॉट फिक्स्ड। ओके, बट हम लोग जेनेटिक बेसिस जान सकते हैं उसमें। आगे उसके आगे के जनरेशन में जब उसको फिक्स करेंगे, रील्स बनेंगे, रिकॉम्बिनेंट इनबिल्ट लाइंस बनेंगे, उनको यूज करके भी किया जा सकता है। तो मैपिंग पॉपुलेशन क्यूटीएल मैपिंग में ये रहेगा, जिसका कि 2 पेरेंट के बेसिस से निकला हुआ है। बट जीनोम वाइड एसोसिएशन स्टडीज में मैपिंग पॉपुलेशन जो रहेगा वो पॉपुलेशन बेसिस पे रहेगा, जो नेचुरल जर्म प्लाज्म नेचर में जैसे है वो बेसिस रहेगा। जैसे ह्यूमन पे, एनिमल सिस्टम पे जीवास काफी यूज हुआ है, तो वहां पर तो जो नेचुरल पॉपुलेशन होगा उसी के बेसिस पे सैम्पलिंग करके किया जाएगा। तो वैसे ही जीवास को प्लांट्स में भी नेचुरल पॉपुलेशन जो रहेगा उसी के बेसिस पे किया जाता है। तो इसमें क्या रहेगा कि जैसे बहुत हिस्टोरिकल रिकॉम्बिनेंट्स इवेंट अगर हुए होंगे काफी, जैसे थ्रू आउट द इवोल्यूशन जो भी रिकॉम्बिनेंट इवेंट होंगे वो फिक्स हुए होंगे जर्म प्लाज्म में, तो वी कैन टेक एडवांटेज ऑफ दैट इवेंट्स आल्सो। ओके, क्योंकि उसका हमें लिंकेज डिसइक्विलिब्रियम हम उसके बेसिस पे ये होता है। तो दिस इज एन एडवांटेज ऑफ दैट। तो इसमें फाइन मैपिंग के चांसेस, मतलब फाइन रिजोल्यूशन होता है क्यूटीएल मैपिंग के इसमें। तो दिस इज आल्सो वन अप्रोच दैट कैन बी यूज्ड to dissect the complex genetic trait.
नाउ ब्रीफली मैं थोड़ा सा, क्योंकि मुझे ट्रेट में आई एम गोइंग to explain, so I'll just briefly explain why I chose this crop, what is the importance of this crop, rather than crop, what is the importance of the traits. Okay, so you know that flaxseed now you get in the supermarkets and all, this has two important things. One is this omega-3 fatty acid. Okay, you can see this is the highest among the plant species. Even the walnut and all, this is very high. Okay, omega-3 fatty acid. And there is something called lignan. Okay, so lignan is SDG lignan, secoisolaricidiol diglycoside. Lignol is there, that has some anti-cancer properties, and that is good for our health. Several lifestyle diseases it helps. So that content is very high. So that is in quite high demand, and India is the 6th largest producer of linseed. Okay. The flax, the stem also can be used as a fiber, linen fiber, whatever the linen clothing you get. So that is based upon this flax plants stem specially. Okay, so that is why this crop is, its botanical name is Linum usitasimum. Usitasimum in the sense which is used, that all the parts are used. Okay, in that way it was given. So now I will choose here this early flowering or maturity. I'll take early flowering here. So for the jivas, what is important? It is important to have the trait variation in the natural population. If there is no trait variation, all accessions are flowering at the same time, then when there is no phenotypic variation, so there are very less chance that the underlying variation in the genotype also low. फिनोटाइप में ही कुछ नहीं दिखेगा तो जीनोटाइप में सेम ही होने के चांसेस होंगे. तो पहली चीज होगी कि हमें इसमें फिनोटिपिक वेरिएशन देखना चाहिए. तो ये इमेज मैंने रखा है कि जिसमें देखिए ये एक लाइन है हमारी लिंसेट की जहां पे कैप्सूल फॉर्मेशन शुरू हो गया है अच्छे से. ओके, और एक दूसरी लाइन है जहां अभी फ्लावरिंग की है, और दोनों का सोइंग जो है सेम टाइप पे हुआ था. तो क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि ट्रेट वेरिएशन. ओके, सो इस तरह का ट्रेट वेरिएशन यहाँ पे चाहिए, and it should be the spectrum of the trait variation starting from very low to very high extreme. Okay, अभी मैं बताऊंगा कि फ्लावरिंग क्यों इम्पोर्टेंट है. जनरली ये क्रॉप आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा जगहों पे नहीं लिया जाता है, क्योंकि ये जो गरीब किसान होंगे, मार्जिनल स्मॉल किसान होंगे, मार्जिनल फार्मर्स, वो ग्रो करते हैं ये, जिनके पास इरिगेशन नहीं है. और इसका सोइंग जो होगा जैसे बहुत बार, तो राइस जो है, राइस के बाद या खरीफ सीजन के बाद रबी सीजन में इसका सोइंग होता है. तो जनरली रेसिडुअल मॉइस्चर में इसका सोइंग होगा. ओके, तो नवंबर में जैसे इसका सोइंग होता है, तो जो बचा हुआ पानी है विदाउट एनी एडिशनल रिसोर्सेज से ग्रोथ होने लगता है. या दिसंबर में कभी कभी जैसे ईस्टर्न महाराष्ट्र, इन सभी विदर्भा प्लेस में इसको दिसंबर तक लेते हैं. और राइस फैलोज जो होते हैं कि खरीफ में राइस का प्लांट लिया और बाद में फैलो लैंड है, तो वहां पे इसका काफी स्कोप है. रेसिडुअल मॉइस्चर पे विदाउट एनी एडिशनल रिसोर्सेस इसको ग्रो किया जा सकता है. तो अभी क्या होगा अगर हम नवंबर मिड में या दिसंबर में इसका सोइंग करेंगे, तुरंत फरवरी एंड में समर शुरू हो जाएगा, गर्मी बढ़ने लगेगी. तो दिस इज अ कूल सीजन क्रॉप. तो जैसे ही गर्मी बढ़ेगी तो इसका फ्लावरिंग या पॉट द कैप्सूल डेवलपमेंट पे इफेक्ट होगा. यील्ड काफी कम आएगा. ठीक है, इसीलिए हमारे इंडिया का जो यील्ड है काफी कम है. जो नेशनल एवरेज, इंटरनेशनल एवरेज है वो 950 है, बट इंडिया का जो है अराउंड 950 केजी पर हेक्टर है. इंडिया का बहुत कम है, अराउंड 550 और सो. सो प्रोडक्टिविटी में एरिया में इंडिया 6th लार्जेस्ट है, प्रोडक्टिविटी में 9th है, ऐसे कुछ अप्रोक्सीमेट है. ओके, सो क्या कर सकते हैं कि अगर हमें थोड़ा अर्ली मैच्योरिंग, अर्ली फ्लावरिंग एक्सेशंस मिले. अर्ली मैच्योरिंग तब मिलेंगे जब वो फ्लावर होंगे, है ना. जब रिप्रोडक्टिव ग्रोथ शुरू होगा तभी सीड सेट होगा, आगे कैप्सूल डेवलपमेंट होगा. तो अर्ली फ्लावरिंग एक्सेशंस अगर हमें मिलता है तो वो अच्छा होगा.
तो अभी क्या होगा कि जैसे नेचुरल वेरिएशन है हमें यहाँ मिल दिख रहा है, बट ये हाई यील्डिंग नहीं रहेगा, तो हमें ये ट्रेड ट्रांसफर करना पड़ेगा किसी पॉपुलर वेराइटी में। तो कैसे ट्रांसफर करें, मार्कर के बेसिस पे ट्रांसफर करें, जीन ट्रांसफर करें, तो हमें उसके लिए उसका जेनेटिक डिसेक्शन बहुत जरूरी है। जैसे और भी कोई ट्रेड होते हैं, सीड वेट, आप जब मार्केट में जाओगे फ्लैक्स लेना है आपको, तो यू विल सी कि बोल्ड सीडेड फ्लैक्स, फ्लैक्स जो है सीड आप पसंद करोगे लेने के लिए। ओके, तो द सीड वेट भी इंपॉर्टेंट है फार्मर्स के लिए भी। ओके, तो इस वजह से क्या होगा कि अगर जैसे राइस फैलो है उसमें ये डाल दिया, अर्ली मैच्योरिंग वेराइटी है, विदाउट एडिशनल रिसोर्सेज फार्मर के पॉकेट में कुछ एक्स्ट्रा पैसे आ जाएंगे, इसको कुछ करना तो है नहीं, बिना मिनिमम इसके ये किया जा सकता है। एज अ क्रॉप भी ग्रो करता है, बट राइस फैलोज में भी इसका स्कोप है। सो दिस टू ट्रेड्स आई हैव चोजन, लाइक अर्ली फ्लावरिंग and the seed weight here to explain the jivas. Okay. Now, डॉक्टर साहब बीच में किसी का क्वेश्चन अलाउ करना है या आई शुड जस्ट गो अहेड? सर वो लास्ट में करेंगे अपन, ठीक है, ठीक है, अभी ऑलराइट। चैट बॉक्स में डालेंगे हाँ लास्ट में। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो ठीक है, आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे, जैसे जैसे आएंगे आप डाल दीजिए, ताकि मैं बाद में इनको आंसर करूं। ठीक है, क्योंकि ऐसी मीटिंग में ऐसे होता है कि वी डोंट सी द ऑडियंस, वी जस्ट सी आवर स्क्रीन एंड जस्ट वी कीप ऑन स्पीकिंग। ऑलराइट, सो जो जीवास का बेसिक अप्रोच रहेगा किसी भी जीवा स्टडीज का, इसमें रहेगा कि आपको आपका एसोसिएशन पैनल सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ द एसोसिएशन पैनल इज द फर्स्ट स्टेप। देन आपको उसका अच्छे से फिनोटाइपिंग करना होगा, स्टैटिस्टिकली रोबस्ट, रिप्रोड्यूसिबल, मतलब मल्टीपल इन्वायरमेंट में, मल्टीपल सीजन में इसका फिनोटाइपिंग करना होगा, आपका जो ट्रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। और फिर आपको उसका जीनोटाइपिंग करना होगा कि जैसे पहले जीनोटाइपिंग एसएसआर मार्कर से करते थे, बट अब एसएनपी बेस्ड मार्कर से ज्यादा, क्योंकि उनका जीनोम में कवरेज ज्यादा है, तो ज्यादा जगह पे वो मिलेंगे हमें, तो उसका डेप्थ ज्यादा रहेगा, उसका डेंसिटी ज्यादा रहेगा। तो एसएनपी बेस्ड फिनोटाइपिंग अगर होता है तो बहुत अच्छा है। ओके, एंड देन इनका एसोसिएशन देखेंगे हम लोग थ्रू सम स्टैटिस्टिकल मॉडल। नाउ हियर, यहीं पे जीवास का डिफरेंस होता है। देयर आर सिंगल लोकस मॉडल, देयर आर मल्टी लोकस मॉडल, देयर आर मिक्स मॉडल, देयर लीनियर, नॉन लीनियर, बहुत सारे स्टैटिस्टिकल मॉडल्स है अभी पब्लिक डोमेन में जो कि यूज किया जा सकता है। देन आपको फिर रैंक द कैंडिडेट जीन्स, इसके बेसिस पे, ये जो मॉडल्स के बेसिस पे ये बताएगा कि कौन सा एसएनपी या कौन सा क्वांटिटेटिव ट्रेट न्यूक्लियोटाइड इज एसोसिएटेड विद द हाई सीड वेट और द लो सीड वेट, उसके अलील्स का कैसे एसोसिएशन है अर्ली फ्लावरिंग में या लेट फ्लावरिंग में, तो ये बताएगा। तो उसके बेसिस पे हमें मतलब ये हमें पता चलेगा, मार्कर पता चलेंगे सिर्फ। तो मार्कर क्या बताएंगे, मार्कर बताएंगे कि इस इस रीजन के आसपास कहीं पे कोई जीन है जिसकी वजह से ये वेरिएशन दिख रहा है, क्योंकि that is statistically, that region marker is just a region which is statistically associated with the trait. Okay, that is not gene itself. एसएनपी जीन में भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, बाहर होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि जीनोमिक रीजन जो है अराउंड 5%, 5 to 7% होगा जेनिक रीजन जहां जीन रहेंगे। ऑलराइट, तो बट हमें ये पता चलेगा कि इस जीन के अराउंड कहीं पे हमें इसका क्वाजल जीन होगा। ठीक है, फिर हम लोग, मैं बताऊंगा आने वाले स्लाइड्स में, हम लोग कैसे सिलेक्ट करते हैं कि कितना रीजन ले जीन का, और फिर हम जीन आइडेंटिफाई करेंगे और उनको वैलिडेशन करेंगे। ठीक है, तो ये 5 इंपॉर्टेंट स्टेप्स है जीवास के। तो अभी हम लोग आगे रिजल्ट में जाते हैं। तो जैसे मैंने बताया था कि सिलेक्शन ऑफ एसोसिएशन मैपिंग पैनल कैसे सिलेक्ट करें हम। ओके, अभी ये चीज डायरेक्टली डिपेंड करती है कि आपके पास कितना पैसा है पैसा है इन द सेंस कि आप कितने एक्सेशंस को जीनोटाइप कर सकते हो। ठीक है, और जीनोटाइपिंग में भी आप क्या अप्रोच यूज करते हो जीनोटाइपिंग का। ठीक है, जीनोटाइपिंग का क्या अप्रोच है। तो जैसे देखिए, जैसे मैं जिस इंस्टीट्यूट से आता हूँ इसका नाम है नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस। ओके, तो यहाँ पे जो है जीन बैंक है। तो जीन बैंक का क्या क्या काम होता है
कि जितना डाइवर्स जर्मप्लाज्म रहेगा किसी भी क्रॉप का, तो उसको कलेक्ट करके हम लोग कंजर्व करते हैं, ठीक है, ताकि वो कहीं लूज नहीं हो जाए। अभी डाइवर्स मतलब जैसे कश्मीर से कोई जर्म प्लाज्म है, लिनसीड है, ठीक है, उसमें कोई ट्रेट होगा, कोल्ड टॉलरेंस होगा या फ्रॉस्ट टॉलरेंस होगा, तो वो इवॉल्व हुआ है उस रीजन में, तो उसको भी कलेक्ट करके हम अपने पास रखते हैं। या एमपी में, महाराष्ट्र में, वहां पे कोई लिनसीड ग्रो हो रहा है, या उड़ीसा में कोई राइस ग्रो हो रहा है, ठीक है, कश्मीर में राइस ग्रो हो रहा है, इधर गुजरात में कुछ हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट में कुछ हो रहा है, तो सब कुछ हम जो हमारे यहाँ कंजर्व करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, वी कंजर्व द जेनेटिक डाइवर्सिटी, ठीक है। तो वैसे हमारे यहाँ पे लिनसीड का जेनेटिक डाइवर्सिटी अराउंड 2500 एक्सेशन जो है वो कंजर्व है। अभी ये काम जो हुआ था, मेरा एक सर का अर्ली करियर रिसर्च ग्रांट था, उसमें हुआ था, उसमें काफी कम पैसे थे, तो हमने अराउंड 131 एक्सेशन जीनोटाइपिंग का बेस्ड अपॉन द फंड अवेलेबिलिटी डिसाइड किया। तो हमने क्या देखा, हमने पिछले इक्रिप के रिपोर्ट्स देखे, कोई पब्लिकेशंस देखे जहाँ पे इन्होंने कुछ फ्लावरिंग के लिए काम किया है या सीड बेड के लिए काम किया है, तो और वो हमारे जीन बैंक में है क्या, वो वैसे देखा हमने। एक्सट्रीम फिनोटाइप रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ वेरिएशन फॉर दैट ट्रेट, ओके। अभी उसमें से हमने 220 एक्सेशन सिलेक्ट किए, उन एक्सेशंस को 5 अलग अलग इन्वायरमेंट में, इन्वायरमेंट मतलब अलग अलग सीजन में, और 2 लोकेशन में हमने उसको इवेल्युएट किया, ठीक है। और उसमें से हमने डाइवर्स पैनल सिलेक्ट किया 131 एक्सेशंस का, जिसका हमने एसएनपी बेस्ड जीनोटाइपिंग किया। जीनोटाइपिंग एक अप्रोच है, जीबीएस, जीनोटाइपिंग बाय सीक्वेंसिंग, जहां पर एंजाइम बेस्ड फ्रैक्शनेशन होगा, और जीनोम का एक कुछ सिलेक्टेड हिस्सा जो है, रैंडम सिलेक्शन, उसको जीनोटाइपिंग करके एसएनपी आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। तो हमने जैसे पैनल सिलेक्ट किया, पहला स्टेप जो था, ठीक है। अभी जैसे मैंने कहा फिनोटाइपिंग होना है, तो वी हैड फिनोटाइप दिस इन द डिफरेंट सीजन, लाइक हमने 2017-18 में पहली बार किया न्यू दिल्ली में, देन 18-19 में किया, 19-20 में किया, देन महाराष्ट्र में एक अकोला रीजन है, थोड़ा हॉट रीजन है वहाँ पे, तो वहाँ किया, और 18-19 में, 19-20 में किया। Okay, now it is important to you all are agriculture student or the science student, you know that इसको हमें किसी statistical design में grow करना होता है, और जब number of accession ज्यादा होते हैं, तो we use a design called augmented block design, जहाँ की replication जो होंगे वो repeat होते हैं across blocks, और accession जो है वो same रहेंगे, तो हम ज्यादा number of accessions हम लोग evaluate कर सकते हैं। तो हमने 220 accessions grow किए डिफरेंट ये जोन्स में जो है, इसके लिनसीड ग्रोइंग एरिया में, जैसे मैंने बताया। नाउ ये जो स्लाइड है ये बताएगी कि कैसा वेरिएशन था, ओके। नाउ दिस अपर डायग्राम्स हमने फॉर फ्लावरिंग वी हैव रिकॉर्डेड डिफरेंट डेटा, बट आई एम गिविंग हियर द एग्जांपल ऑफ द फ्लावरिंग। So we had recorded the initiation of flowering, that is DF5 is the 5% flowering, days to 50% flowering, and completion of flowering is days to 95% flowering. And now these are the different environments like Akola, 18, 19, 20, Delhi, all that. This is for days to flowering. And now these are the observation, and these are the days. Now you see the initiation of flowering is as low as 35 days to around 90 days in Akola. Okay. Same thing around like around 42 days to around 80 days. And in Delhi also, because the Akola climate is little hotter, so the flowering is earlier there. And in the Delhi, the flowering is relatively late initiation, but it goes as late as 125 days. Similarly, days to 50% flowering and days to 95% flowering. And whatever the line you see here, these horizontal lines, these are accessions, data points actually. Okay, and the bulge here shows that most of the accessions are concentrated here. So जैसे मैंने पहले बताया था कि एक spectrum of variation होना है, तो we could see the spectrum of variation here, कितना ज्यादा spectrum है, okay. Such type of trait variation should be there. So same thing for DF50, same thing for DF95. Okay. So to see this,
in this table you can see the range of variation for the initiation of flowering is from the 40 days to 82 days in Akola. Similarly, in the Delhi, it is around 50 to 123 days, and a few days more or less in the different seasons. Same thing for the DF5 and DF95. तो इस तरह से हमने ये पूरा डेटा रिकॉर्ड किया सारे 131 एक्सेशंस का 220 किए थे, 131 जीनोटाइपिंग के लिए यूज किए. नाउ इस वाले स्लाइड में हमारा फिनोटाइपिंग कंपोनेंट पूरा हो गया. ऑलराइट, नाउ दिस इज अ जीनोटाइपिंग कंपोनेंट. तो जीनोटाइपिंग बाय सीक्वेंसिंग जैसे होता है, मैंने बताया है कि इस अप्रोच में दिस अप्रोच इज आल्सो कॉल्ड रिड्यूस रिप्रेजेंटेशन सीक्वेंसिंग. ओके, तो इस अप्रोच में क्या होगा, किसी एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को या समटाइम दो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम भी यूज करते हैं. तो जीनोम को, कॉम्प्लेक्स जीनोम को फ्रैक्शन मतलब डाइजेस्ट कर देंगे, जीनोम को डाइजेस्ट कर देंगे, एंड देन कुछ एडेप्टर लाइगेट करेंगे जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के साथ होंगे. ओके, एंड देन वी सीक्वेंस दैट. तो हमें रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बीच का जो रीजन है उसके बीच का सीक्वेंसिंग पता चलता है. दिस अप्रोच एज आई टोल्ड इज कॉल्ड रिड्यूस रिप्रेजेंटेशन सीक्वेंसिंग. दिस इज अ चीपर वर्जन than the complete whole genome sequencing that takes a lot of cost. But here जैसे सिंप्लीफाई करके बताऊं तो जैसे AFLP होता था, आप लोग जानते होंगे, AFLP होता, तो AFLP में रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करते थे एंड लेंथ वेरिएशन मापते थे उसमें. ओके, here we do indels also, we do length variation as well as we do the sequence variation. तो इस वजह से हमने ये 131 एक्सेशन सीक्वेंस किए, इल्यूमिना हाई 6 से सीक्वेंस किया, एंड नाउ लिनसीड के 15 क्रोमोसोम्स है. तो नाउ यहाँ पे ये बता रहा है कि कैसे SNPs जो है ये डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं. ठीक है, ये कुछ एडिशनल चीजें होती है NGS में, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग में, कि आपका जो SNP कॉल हुआ है उसका रीड डेप्थ क्या है. ठीक है, कितने डेप्थ पे वो आपको SNP बोल रहा है. तो हम लोग कुछ फिल्टर लगाते हैं इसमें, कि जैसे कोई SNP को हम लोग अच्छी क्वालिटी SNP तभी मानेंगे जब उस SNP पे एटलीस्ट 10 रीड मैप हुए हो. ओके, एक दो में अगर एरर आता है तो दैट कुड बी मिसलीडिंग. तो एटलीस्ट 10 रीड मैप हुए हो, तो कम से कम 10 रीड तो होने चाहिए. और जैसे मिसिंग डेटा है, कभी कभी होगा कि किस एक्सेशन में ये SNP कॉल हुई है, आई है, पर किसी एक्सेशन में वो कवर ही नहीं हुई है. तो मिसिंग डेटा जो है 20% से ज्यादा नहीं होना है. और जो माइनर अलील फ्रीक्वेंसी है, कोई अलील है जिसका कि माइनर अलील फ्रीक्वेंसी मतलब कि जो नेक्स्ट अलील होगा उसका फ्रीक्वेंसी कितना रहेगा. SNP बायलिलिक होता है, तो जैसे मेजर अलील जो है, तो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द नेक्स्ट अलील, दैट इज कॉल्ड माइनर अलील फ्रीक्वेंसी. तो अगर वो 5% से 8, कभी 5% लेते हैं, हमने इस स्टडी में 8% लिया है. थोड़ा स्ट्रिंजेंट हमने ये किया है कि कुछ SNP वेरिएशन सीक्वेंसिंग की वजह से अगर आए होंगे तो वो हम लोग अवॉइड कर सके, बट 5% वेरिएशन भी चल जाता है. तो इस हिसाब से हमने 68,925 SNP चूज किए, हाई क्वालिटी SNPs. अभी ये SNP का डिस्ट्रीब्यूशन भी जो है थ्रू आउट होना चाहिए, क्रोमोसोम पे होना चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं कि हमारा ट्रेट जो है, जीन जो है, ये फ्लावरिंग के लिए मेजर जीन जो होंगे वो किस क्रोमोसोम पे होंगे, वी डोंट नो. तो क्या होना चाहिए, ये थ्रू आउट जीनोम, जितने 15 क्रोमोसोम है जिस भी क्रॉप के क्रोमोसोम से, उन सब में डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए. तो यहाँ पे ये ग्राफ दिखा रहा है कि हाउ दिस SNPs आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द डिफरेंट क्रोमोसोम्स. मिनिमम जो है हमारा कुछ 2700 SNP आए हैं, और मैक्सिमम जो है हमारे ये 6300 SNP आए हैं. अभी ये इस पे भी डिपेंड करता है कि वो क्रोमोसोम का लेंथ कितना है. ठीक है, बट देयर शुड बी SNPs ऑन ईच क्रोमोसोम. ये नीचे का जो SNP डेंसिटी प्लॉट है, ये दिखा रहा है कि जैसे ये लिंसिड क्रोमोसोम से 15 कि थ्रू आउट क्रोमोसोम SNPs का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है. ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये ग्रीन है, यहाँ पे ये एक दिखा रहा है, तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, और जो ब्लैंक एरिया है वहां पे SNP नहीं है. तो जैसे हम लोग देख सकते हैं कि SNPs कम या ज्यादा थ्रू आउट क्रोमोसोम्स पे डिस्ट्रीब्यूट हुई है, अक्रॉस क्रोमोसोम डिस्ट्रीब्यूट हुई है. बीच में कुछ रीजन छूटा होगा, हो सकता है वो सेंट्रोमियर रीजन हो जहाँ की रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन ठीक से नहीं हुआ हो.
तो बट ये दो फिगर दिखाएंगे कि हमारा क्रोमोसोम वाइज भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ है एंड अक्रॉस क्रोमोसोम भी एसएनपी डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ओके, अभी कुछ और चीजें हमें ध्यान में रखनी होती है जब हम लोग जीवास एनालिसिस करते हैं कि उसका पॉपुलेशन स्ट्रक्चर, ठीक है, ये क्यों जरूरी होता है पॉपुलेशन स्ट्रक्चर एनालिसिस, कि कभी कभी जो आइसोलेटेड पॉपुलेशन होगा, जैसे अगर जैसे हमारे यहाँ कुछ एक्सेशंस है, एक्सोटिक एक्सेशंस है, जो यहाँ पे दिख रहा है ईसी एक्सेशन मतलब एक्सोटिक कलेक्शन, आईसी मतलब इंडिजिनस कलेक्शन। तो कुछ कलेक्शन जैसे कनाडा से होंगे, ठीक है, तो कुछ कलेक्शंस ऐसे कनाडा के कलेक्शन जहाँ की इनका इधर इंटरमिक्सिंग नहीं हुआ है। तो बहुत बार क्या होगा कि फॉल्स एसोसिएशन होने के चांसेस होते हैं इफ द पॉपुलेशन इज कंप्लीटली स्ट्रेटिफाइड, डिफरेंट है, ओके, कुछ इंटरमिक्सिंग नहीं है। तो ऐसा पॉपुलेशन कुड गिव यू अ रॉन्ग एसोसिएशन। जैसे अगर मतलब कुछ भी किसी का हेयर कलर बाहर जो है, हेयर कलर अलग है, वहां पे ग्रे ग्रे हेयर है या रेड हेयर है, ठीक है, इधर इंडिया में ब्लैक हेयर है, एंड देन उसका इंटेलिजेंस से कुछ रिलेशन नहीं है, बट अगर हम लोग या एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है या वेल्थ से रिलेटेड नहीं है, बट अगर हम देखें कि वेल्दी कंट्रीज है, यूरोपियन कंट्रीज में ज्यादा पैसे हैं, तो हम लोग ये फॉल्स एसोसिएशन ले सकते हैं कि किसी के रेड हेयर होने से उसके पास ज्यादा पैसे है, तो दैट इज अ फॉल्स एसोसिएशन। तो ये बहुत वेग एग्जांपल दिया मैंने, बहुत सोच के नहीं दिया, तो डोंट जस्ट गो बाय दैट, बट व्हाट आई मीन टू से कि टू अवॉइड द फॉल्स एसोसिएशन द एसएनपी शुड बी, द पॉपुलेशन शुड नॉट बी वेरी क्लियरली डिस्टिंक्ट। तो यहाँ पे जैसे ऑल्दो हमें यहाँ दिख रहा है कि ये एक पॉपुलेशन जो है इसमें ये सेपरेट है, बट इसमें भी कुछ इंटरमिक्सिंग है। ये जो अलग अलग कलर्स आप देख रहे हैं, जैसे ये रेड कलर है, ग्रीन कलर है, ये है सायन है, एंड देन दिस पर्पल कलर। तो हर पॉपुलेशन में कुछ इंटरमिक्सिंग है, दूसरे पॉपुलेशन का कुछ ब्लड है, तो दैट शोज इट इज नॉट कंप्लीटली स्ट्रेटिफाइड। तो इस तरह का पॉपुलेशन चाहिए। तो देर आर डिफरेंट मेथड्स टू शो कि एसएनपी बेस की पॉपुलेशन स्ट्रक्चर कैसा है। तो हमने ये देखा, ये डेल्टा के वैल्यू होता है जिसके बेसिस पे हम लोग डिटरमाइन करते हैं कि हाईएस्ट क्या पॉपुलेशन पीक है। तो 4 पे हम ड्रॉ करके देखेंगे कि कितना कैसा पॉपुलेशन आ रहा है। तो यहाँ हमने देखा कि 4 पॉपुलेशन है, एंड दिस इज द डेंड्रोग्राम ऑफ द एक्सेशन शोइंग द हाउ पॉपुलेशंस आर डिफरेंट। आप लोगों को ये दिख रहा होगा कि कहीं कहीं पे ईसी है और उसके पास तुरंत कहीं पे आईसी है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपके माइंड में कि ये तो एग्जॉटिक कलेक्शन है, तो इतने पास कैसे आए। इसका ये आंसर हो सकता है कि जैसे अभी ये रेगुलेशन तो अभी हुआ, बट ये बहुत सारा जर्म प्लाज्म जो है फॉरेन कंट्रीज में जा चुका है पहले, जब जैसे रेगुलेशन नहीं था। तो बहुत बार जैसे इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताऊं, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि फ्लैक्स का जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस, फ्लैक्स में, ओके, फ्लोर का जो हाइपोथेसिस था जीन फॉर जीन। तो उस जब मैंने वो ओरिजिनल पेपर पढ़ा, समथिंग लाइक 44 1944 या 52 या 53 का पेपर है, तो उसमें कुछ कल्टीवार्स के नाम जो है वो बॉम्बे फ्लैक्स ऐसे लिखा हुआ है, बॉम्बे फ्लैक्स। तो उसका मतलब क्या है, अभी अगर हम लोग वो या वहां से मंगाएंगे तो वो एग्जोटिक कलेक्शन के नाम से आएगा, बट वो होगा इंडिया का ही, बॉम्बे मतलब इंडिया का ही रहेगा, मुंबई महाराष्ट्र के रीजन का। तो उस तरह से ये वाला ये रीजन हो सकता है, दैट इज वाई देर आर सम ईसी एंड आईसी एक्सेशंस व्हिच आर क्लब टुगेदर हियर। नाउ जैसे थर्ड स्टेप मैंने बताया था कि थर्ड नहीं, फोर्थ स्टेप था कि मल्टी लोग जो है डिफरेंट स्टैटिस्टिकल मॉडल्स यूज करने हैं। तो देर आर डिफरेंट मॉडल्स, सिंगल लोकस मॉडल, देर आर मल्टी लोकस मॉडल्स विच आर अवेलेबल नाउ। तो हमने जो है मल्टी लोकस मॉडल चूज किया, जिसमें कि जो कॉम्प्लेक्स रेट के लिए ठीक होता है, क्योंकि मोर देन 1 लोकस आर एसोसिएटेड। तो ये बाकी का भी लोकस का कंसिडर करता है। तो ये जो है मल्टी लोकस मॉडल, एंड ये जो है इस ब्रैकेट में फास्ट एमआर इमा, फास्ट एमआर एमएलएम, आइसिस ईएम ब्लासो, एमआर एमएलएम, पीकेडब्ल्यू एमईबी, ये सभी जो है अलग अलग मॉडल्स है, कोई लीनियर है, नॉन लीनियर है, बट मल्टी लोकस मॉडल्स है ये। एंड इसमें हमने एक थ्रेशोल्ड रखा, या जो मॉडल्स ने सजेस्ट किया हुआ है ऑलरेडी पब्लिश, इससे कि 3 LOD लॉगरिथम ऑफ ऑड्स 3 या 3 से ज्यादा होना चाहिए। तो ये जो आप इस ये जो प्लॉट्स है, इन प्लॉट्स को कहते हैं मैनहट्टन प्लॉट्स,
ओके, ये क्या करता है कि जो एसएनपीज होता है और उनका एसोसिएशन फॉर द ट्रेड को डिस्प्ले करता है। तो यहाँ इस प्लॉट में ये सारे डॉट्स जो है वो एसएनपीज है, ठीक है। और ये इसका पी वैल्यू है, ये एलओडी वैल्यू है। तो जितना हायर डॉट रहेगा, ठीक है, उसका उतना एलओडी स्कोर हायर रहेगा, मतलब उतना उसका एसोसिएशन ज्यादा है। ये जो डैश लाइन है, इसके नीचे के एसोसिएशन हम लोग स्टैटिस्टिकली इनसिग्निफिकेंट एसोसिएशन मानते हैं और इसके ऊपर स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट एसोसिएशन मानते हैं। इसके अलावा हमने, और ये जो प्लॉट है ये है क्वांटाइल प्लॉट, तो जिसमें कि एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगी और ऑब्जर्व वैल्यू क्या है उसको प्लॉट करता है, ठीक है। तो वी हैड टेकन सम एडिशनल फिल्टर्स हियर ताकि फॉल्स एसोसिएशन नहीं रहे। तो हमने जहां और यहाँ पे जो पिंक डॉट दिख रहा है ना, ये पिंक डॉट 2 से ज्यादा मेथड से अगर कोई एसएनपी आइडेंटिफाई हुई है तो वो पिंक डॉट दिखाएगा, ठीक है। और ये सारे 6 मॉडल का कंबाइंड प्लॉट होगा। ये हम लोग अलग भी रख सकते हैं, बट कंबाइंड प्लॉट होगा 6 मॉडल का। और जहाँ 2 है, यहाँ पिंक कलर है, वहां बताएगा कि 6 से ज्यादा, सॉरी 2 या उससे ज्यादा एसएनपीज एसोसिएटेड है। और ये अलग अलग जो है ये डिफरेंट क्रोमोसोम्स के कलर है, ठीक है। ऑलराइट, तो हमने ये कंडीशन रखा कि कम से कम ऐसे एसएनपी हम लोग चूज करेंगे, अगर वो ट्रू एसएनपी होगा एसोसिएटेड, तो वो 2 से ज्यादा मेथड में भी आएगा या 2 से ज्यादा इन्वायरमेंट में आएगा। उनको हमने स्टेबल एसएनपी बोला हुआ है, ठीक है। तो ऐसे हमें 53 स्टेबल एसएनपी, जिसको कि हम, क्योंकि मल्टीलोकस है तो क्वांटिटेटिव ट्रेट न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, जो कि 2 से ज्यादा मेथड्स में और 2 से ज्यादा इन्वायरमेंट में हमें मिले हैं। ओके, और ये कितना ट्रेड कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कितना जो वेरिएशन है, अराउंड 36% ऑफ फिनोटाइपिक वेरिएशन ये एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी। ऑल राइट, तो दिस इज द लिस्ट ऑफ एसएनपीज फॉर 5%। जैसे ये वाला जो था 5% के लिए था, मैनहट्टन प्लॉट की 50% के लिए, एंड दिस इज फॉर द 95%। नाउ व्हाट आर द क्यूटियंस आइडेंटिफाइड, और उनके एलील क्या है, उनका फिजिकल, व्हाट इज द फिजिकल लोकेशन ऑन द क्रोमोसोम, कहाँ पे है, कितना पोजीशन है, एलओडी स्कोर क्या है, पी वैल्यू क्या है, कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है ट्रेट वेरिएशन में, माइनर एलील फ्रीक्वेंसी क्या है, कौन से एलील्स है, पहले एलील का मतलब नेक्स्ट एलील का फ्रीक्वेंसी क्या है, किन मेथड से एंड किस एनवायरनमेंट में मिला है, ये टेबल इसका एक्सप्लेन करता है, ठीक है। तो ये जो ये नंबर्स है इन ब्रैकेट दैट रिप्रेजेंट द मेथड्स, सो बिलो गिवन्स आर द मेथड्स, एंड ये जो AK1920 है, ये जो है हमने जैसे एक्सप्लेन किया था, दीज आर द इन्वायरमेंट्स। ओके, तो हमें पता चल रहा है कि कुछ कुछ एसएनपी, जैसे ये वाला एसएनपी 2 मेथड से आया है इसलिए हमने यहाँ लिया। कुछ एसएनपी जो है वो बहुत अच्छे, एक से ज्यादा मेथड्स में भी, 2 से ज्यादा मेथड्स में भी आया है, 2 से ज्यादा इन्वायरमेंट में भी आया है। जैसे ये वाला देखिए, ये अकोला में भी आया, दिल्ली में भी आया, दिल्ली में भी आया, 4 मेथड्स से आया है। ओके, तो इसको, और इसका काफी अच्छा फिनोटाइपिक वेरिएशन भी काफी अच्छा है, ठीक है। तो ये वाले, तो वी सिलेक्टेड सच क्यूटियंस स्टेबल, वी कॉल्ड इट द स्टेबल क्यूटियंस। So these are the traits associated with the 5% flowering. Now similarly there are the traits which are SNPs which are associated with the 50% flowering. इसमें भी we could get SNPs across locations and across environments. Okay. So these SNPs are for the 50% flowering. These are the QTNs for associated QTNs for the 95% flowering. Okay. अभी next step we map them on the chromosome to identify कि कौन से क्रोमोसोम में कौन सा ऐसा रीजन है जो एसएनपी रिच रीजन है। एसएनपी रिच इन द सेंस क्यूटीएन रिच रीजन, एसोसिएटेड एसएनपीज रिच रीजन, व्हाट आर द रीजन, सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई। सो ये वाले जो चीज है यहाँ पे एसएनपी रिच रीजन है। अभी ये वाला ग्राफ जो है हमने जो पेपर पब्लिश किया था, इसमें हमने डेज टू मैच्योरिटी भी है एंड द प्लांट हाइट भी है। तो द ग्रीन इज फॉर द प्लांट हाइट,
This red one is for the days to maturity, and the blue one are for days to 5, 50 and 95% maturity. Now we can see here the flowering is a complex trait and how the SNPs are distributed across different chromosomes. So what are the QT enriched region? This is the QT enriched region. Okay, जहाँ एक से ज़्यादा SNPs. Sometimes the traits days to correlated with the flowering, so they are also sometimes combined together. Now, this is an important slide. Now we have got some SNPs, like now you see these are the SNPs which are associated with the flowering time trait. Okay, but they do not explain anything about the gene. They are just SNPs. Okay, they don't show mention anything about the gene, but they mention how strong these genes are associated. Now, how to identify the candidate gene? Okay, now for that we need to go to the genetics to study the linkage disequilibrium decay. Okay, now to understand this, we need to understand what is the linkage disequilibrium. Now, this is the non-random association of alleles. The alleles which are their association, non-random associations. Okay, to understand this is population genetics concept. If there is no association between the alleles and if they are random, okay, in the completely equilibrated or when there is a complete equilibrium in the population, there are no associations. Okay, but in the random meeting population, they are in the disequilibrium because they are somehow linked together, closely associated. Some loci are associated with each other. Okay, that association we need to find out. So how long, like the recombination frequency, it depends upon the recombination frequency, whatever the historical recombination had occurred. Okay, as we go apart from between the two SNPs, the linkage disequilibrium decays. Okay, now for each population, for each crop, this LD decay is different. So for the Jiva study, it is important to understand what is the LD decay for this particular population. So we tried to study using the SNPs. The input for this is SNPs, and this identified this does like millions of combination between the two SNPs. What is the chance that in the other population it is showing the recombination? If they are like two SNPs are very close in the random population, also they are closely related. And how between the SNPs with the increasing distance, it is decaying. So that this red line shows this LD decay. So this is the physical distance. This line, the x-axis shows the physical distance. Okay. Now, like this is in the mega bases. Now you see here, as we go from here to this side, left to right, this is the higher distance. Now the 50% LD decay is generally considered. So here we could see that it is the 50% decay is observed at just the 30 kb region, 30 kilobase region of the chromosome in this mapping population. So what we need to do, we need to consider the SNPs or the gene, the chromosome region 30 kb upstream and the downstream of the significant SNP. Okay, so any SNP which is tightly linked or the linked with the trait associated, we will say associated with this trait here. So we will go downstream 30 kb and upstream 30 kb. We will consider that region, and in that region, what are the genes available, that we'll see, and what are their possible function, that we'll see. Okay, so like in the biology, whatever the work was done in the other crops also, like in the Arabidopsis or in the other crop, and we know that what are the possible genes which are related to flowering based upon the other crops example. Based upon that, we select the candidate gene and for the further validation. So now, based upon such LD decay, we identified a few candidate gene, and interestingly, you see this is the best Arabidopsis hit, and this is the functional annotation. We identified what are the potential candidate gene. Now,
there are the genes which are regulated for the meristem development. Okay, you know that apical meristem is important for the flowering of like floral reproductive organ development. There are some kinesin light related gene for the pollen tube growth. Okay, there are some gene for the polar nucleus fission, some for pollination, for the pollen tube growth, for the karyogamy, for the microsporogenesis, okay, for the MAP kinase activity, for the cytoskeleton, okay, mitotic cycle, pollen development, some protein ubiquitation, so reproductive system development. So based upon this gene, we can, these are the putative gene. We don't know whether gene are actually responsible, but based upon the functional annotation, we can say that they might be involved with this because their function in the other plant is also same with the reproductive development. Okay, so based upon that, we identify the putative SNPs. Then the next step, the last step is to validate the SNPs. Sorry, validate the candidate gene. Now, suppose I have got a gene, but it does not express in the reproductive organ. So the chances of that having a candidate gene is less. Or apical meristem, if it doesn't express, then that is less. There are some genes which, the flowering hypothesis says that there are some genes which are expressed in the leaf, transport to the stem, and then goes to the apical meristem, and where the reproductive organ development, like flowering initiation or the bud initiation occurs. So for that, what we did, there is we have to do some expression analysis. We can do the real-time PCR of the gene, okay, or we can validate for the independent population by the biparental population, the identified QTL. So we chose here the transcriptome analysis. So what we identified one variety which is early flower, late flowering comparatively. Now this is just a check variety actually, and we identified the accessions which are early flowering and maturity. Now we took two such accessions. This is IC523807, okay, and these two accessions we took, and another is IC525939, early flowering and maturity. And then we had done the transcriptome. We developed around 47 GB filter data from the 20 data set, like bud 1, bud 2, flower, leaf, and stem. That is in the 2 replicate for 2 accessions. So total 20 transcriptome we sequenced, okay, reproductive as well as vegetative. And this statistics is how much data we got in each transcriptome. Now this transcript need to be mapped on the reference chromosome. So how much percentage of the reference are matched? So this is showing more than like minimum match is 92%. This is, which is quite high actually. Okay, 92 to 96%. And then we identified the differential expression gene between the vegetative tissue and in the reproductive tissue. So here, so as we said, we have identified the one developmental stage called bud 1 versus leaf, bud 1 versus stem, bud 2 versus leaf versus stem, flower versus leaf, flower versus stem. And we identified around 14,000 differentially expressed genes. The genes which are at least twofold upregulated or twofold downregulated, that we called a differential expressed gene. And this map, this is called as Volcano plot, and this shows how the log fold change in the expression, upregulated and the downregulated genes. Okay, and now you can see this these IDs here. These are gene IDs. These are the top 10 upregulated gene in the different comparison. Bud versus leaf, bud 2 versus leaf, flower versus leaf. Okay, this is a representative figure I have shown here. For only one accessions and only one bud 1, bud 2, and the flower. Versus stem also it is there, but I have not shown here. Now this plot is called the upset plot, and here we can map how many genes are upregulated or the downregulated. These are the upregulated genes. Are upregulated gene in these accessions in the combination, like in the bud, like in bud 1 versus leaf, how many genes are there? In bud 2 versus leaf, how many genes are there? Flower versus stem, bud 1 versus stem. So all this combination we see.
So this is the combination where bud 1, bud 2 and the flower. Their combination shows highest common genes which are differentially regulated. Similarly, here the same combination shows highest number of genes. Here it is the second largest, here it is the largest one, the highest combination genes. Which are differentially expressed. Okay. Now we there are in the we need to map this differentially expressed gene in the different pathways. This is cake analysis pathway. Okay. So like we know those who are working on the flowering time trait, we know that the circadian rhythm and the photoperiod flowering time pathways. Circadian rhythm is a part of the photoperiod flowering time pathway. Flowering regulation pathway, and linseed is like Arabidopsis is facultative long day plant, and circadian rhythm plays an important role in that to identify what is the day length and how the genes are playing. Now here you can say whatever the marked genes are there. These are down regulated genes, pink color genes or red color genes. The higher the intensity, higher they are down regulated, and the blue are the up regulated genes. Now, this down and up regulation in the sense, these pink genes are highly expressed in the leaf, and these few genes are highly expressed in the floral tissue. So, these mostly the regulation, the perception does occur in the leaf, and there are some florigen which goes from leaf to apical meristem, and where the organogenesis occurs, reproductive organogenesis. So this shows that important pathway genes were mapped, were identified in our transcriptome analysis, which are canonical flowering, canonical circadian rhythm. मतलब जो established pathways है उसके genes भी हमें identify हुए हैं इसमें. Okay, वैसे ही वैसे ही जो हार्मोन रेगुलेशन होते हैं डिफरेंट हार्मोन्स, उनमें कितने जीन्स है जो कि अप रेगुलेटेड डाउन रेगुलेटेड जीन हुए हैं. जैसे ये ब्लू इज द अप रेगुलेटेड, रेड आर द डाउन रेगुलेटेड. सो द डिफरेंट पाथवे, ABA pathway, brassinosteroid pathway, auxins, cytokinin, they play important role, and several redox reactions are plays important role, and that is the upregulation. This is a display of how different pathways are playing role in the flowering regulation. Okay, now then we characterize these genes, gene ontology study, and identified that mostly the enriched pathway, what is the transcriptome, what are the enriched geo term. So we can say here the floral organ development are the enriched term. Okay, so top 40 terms are mentioned here, and these are the expression of these genes. Okay, so now all this data, based upon this data, like from earlier Chivas. So whatever the candidate gene we had identified in the Chivas, we tried to see their expression here. Okay, now these are the candidate genes which we had identified in the Chivas, and these are the different accession, bud 1, bud 2, flower, leaf, and stem. And this is the expression upregulated and downregulated. Okay, so this can help us take decision on what are the potential candidate gene, what to downstream, because so many genes cannot play, all genes cannot play crucial role, so we have to narrow down. So this analysis will help us to narrow down. I'll tell you the picture. Now, the earlier slide was the candidate gene identifying the jivas and their expression. Now, what are the differentially expressed gene, top 100 differentially expressed gene? So that also we took. So see, there are some genes which are highly expressed in both accession in the stem tissue. There are genes which are highly expressed in the both accessions in the leaf tissue. There are genes, this red means high expression. There are genes, the cluster of genes which show the high expression in bud 1, bud 2, and the flower tissue in both the accessions. Like that, we can help to identify what are the important genes playing role in the flowering regulation. Now, we know that in the Arabidopsis and the other plant, lot of work has been done on the flowering time. So we took the orthologs of such genes and tried to identify their expression. We could get some important genes like florigen, flowering locus T, which we know that it express highly in leaf and stem. So we show in leaf and stem. There are genes HL9 or constans, okay,
flowering locus K, all these genes are expressed in the as expected in the leaf and tissue. Now, based upon, like I have told about the RNA-seq, what are the differentially expressed genes? Now, based upon the orthologs, what are the differentially expressed gene and the candidate gene? So, based upon these, we could identify two genes which are which were there in the differentially expressed, also in the known genes from the other plants like Arabidopsis also, and from the Jivas also. There were two genes which are common in all these three conditions. And those three genes were the flowering locus T, which is known to have role in the flowering, and then one APT domain, ERF transcription factor. Okay, so these two genes we say ki are crucial for the flowering time regulation in the linseed form based upon this study. Now, this is one trait. Similarly, I will just rush here because the time is running out for me. So the another trait is the seed weight trait. Similarly, we phenotype for the seed weight trait and see this variation for the 1000 seed weight starting from 2.2 to maximum 10.27. Okay, so such a large variation. You can see the spectrum of this variation under the different condition. Now this we have done the Jivas and identified the significant SNPs. Here we identified the 30 stable QTNs. Now the beauty of having the accession genotype is that once you genotype, so same genotyping information can be used for the multiple phenotyping trait. You phenotype that trait for the disease resistance, for the abiotic stress, for the drought stress, for the yield, for any trait, and use the same genotyping panel. You can do the Jivas. That is the example of this. So in this, we identified around 30 stable QTN explaining 38% of the trait variation. Okay. Now these are the important stable QTNs, 30 stable QTNs we identified, and here the QTNs which are marked in the yellow are very significant QTNs contributing more than 10 R square or the trait value, variation, contributing variation to that. We mapped these on the chromosome and identified the cluster of chromosomal region which could contribute, which could be the QTN rich region associated with the seed weight trait. Now this is one important figure where what we did, we selected the significant QTNs, and then whatever the two SNP alleles are there, significant QTNs, A or G. Okay, the major allele, minor allele, what was the next? Then we divided the population based upon that two alleles. Okay, now here, now you just see any one example. You take this example. Okay, now here, so we divided, these are the two different alleles. This red one is the A and this cyan is T color. Okay. Now, whatever the accessions carrying the A allele and carrying the T allele, we calculated the seed weight, and you can see the difference here. There are the statistical difference between the accessions carrying different alleles. Now, this is the beauty, how the different alleles are responsible for the trait. So this can help us to enrich the accessions or the popular variety with such alleles having the desirable effect on the trait. Okay. Now we identified the potential genes, and there are very important genes like it is an oilseed crop. So we got the genes for the lipid transport, seed number and the size, embryo development, seed maturation, some repressors, some mucilage seed development, all these important genes. We tried to do the in silico expression and identified, validated these genes. Okay. Now I summarize here. The Jivas study identified 53 QTNs for flowering time, and like the potential genes we identified, we had done transcriptome study to validate these genes, and the transcriptome study how differentially expressed gene and the geoterm and the Kegway enriched terms were identified, and how two genes from Jivas to transcriptome, two genes were identified to play key role in the flowering time regulation in linseed, and same thing for the 1000 seed weight in the linseed. So this research was funded partly by the Early Career Research Award
from the Science and Engineering Research Board, serve, and the Department of Biotechnology with this project, the two projects. And the phenotyping was done at Akula, and our collaborator, Dr. Sunil Gomashe, helped us. And here, Dr. Vikender Kaur, who is a scientist in Division of Germplasm Evaluation, who is also a partner in this DBT funded project and the co-coordinator. I acknowledge them. I acknowledge the head of division and the director I see in VP for their support. Thank you. And Thank you so much, sir. Nice presentation. Thank you, sir, for taking the time to share your insights on such an important and valuable topic, genetic dissection of complex traits in linseed using genome-wide association study and transcriptome analysis, covering in detail the importance of early flowering and maturity in linseed, the basic approach of GWAS analysis, and how to select germplasm accession of GWAS multilocus model down-regulated and up-regulated genes in hormone regulations. Thank you so much, sir. There are some questions from participants. Sir, what are the precautions we should follow during SNP genotyping and sequencing? Okay, the most the most important precaution we should take is our plant should be homozygous in nature. Because sometimes what we in the natural population, the plants are not often homozygous, and that may because if they segregate in the next generation, so whatever we have genotyped, and if that allele is not present in that, so the first precaution should be whenever we are using for the genotyping, the plant should be purified, and then that should be used for the sequencing. And now it depends upon the funds actually that what you go, whether it is you go for the GBS presentation or you go for the whole genome resequencing. Okay. And in that, whatever I said, that whatever the data you get, at least for whatever the SNP you are calling, at least 5 to 10 read depth should be there in there. Okay. So the 5x data at least should be there to make a call. More depth is better. Okay. And so whatever the pipelines are there, QCs and QC values, SNP calling value, the heterozygous should be like we can ignore the multi-allelic SNP should be ignored, and the quality score should be taken into consideration. So these are the major things we should be taken care while sequencing. Thank you, sir. This question was from Ajit Manade. Thank you, sir, for your engaging and insightful presentation, as well as for addressing all the participant queries. I'm confident that participants have greatly benefited from your extensive expertise. We sincerely appreciate your willingness to share your profound knowledge with us. Wishing you continued success in your path. Thank you once again, sir. Thank you, sir. I think sir is busy. Sorry. Say Now, if there are no queries, should I disconnect now? Sure, sir. Sure, sir. Sure, sir. Okay. Thank you so much, sir. Thank you so much, Dr. Jitendra. It is my distinct honor to introduce Dr. Dilfuza Zabrova, an esteemed scientist and the head of the Laboratory of Medicinal Plants, Genetics and Biotechnology at the Institute of Genetics and Plant Experimental Biology, Academy of Sciences of Uzbekistan. Ma'am is a well-known expert in plant microbe interactions, medicinal plant research, plant physiology, soil biochemistry, and soil microbial ecology. Her academic journey and global research footprint include prestigious fellowships such as the China Great Wall Fellowship at South China Agricultural University, Guangzhou, the DED German Academy Exchange Service Research Scholarship at Leibniz Center for Agricultural Landscape Research, Germany, the Department of Biotechnology, and the World Academy of Sciences, DBT TWAS postdoctoral fellowship at ICR Indian Agricultural Research Institute, New Delhi, India. Ma'am has authored more than 36 peer-reviewed publications
and has presented her work at numerous international conferences, including prominent events in Canada, the Netherlands, India, and Turkey. She is an active editorial board member for leading journals such as Frontiers in Microbiology and a member of esteemed organizations like the American Society for Microbiology and the Association of Microbiologists of India. Her multidisciplinary approach and dedication to advancing agricultural sustainability and ecological research have made her a towering figure in her field. Ma'am, your outstanding accomplishments are truly inspiring, and it would be impossible to capture them all in such a short period. With the utmost respect, I warmly welcome you and happily hand over this virtual stage to you. Over to you, ma'am. Thank you. Good evening, scientists, professors, research scholar, faculty members. Thank you so much, Dr. Jitendra Singh, inviting me this workshop. I share my presentation now. Today I am talking about Due to some technical issue, we will take a short break. Ma'am will be with us in few minutes. sorry, connection is problem in my side. Yes, ma'am. Yes, ma'am. No problem. Please continue. Okay. Biochar also improved in the soil microbial activity, also enzyme activity. Also, most important thing, also biochar also decreasing global warming in the world, also reducing atmospheric CO2 concentration. Biochar also addition in the to soil also significantly increased in the soil nutrients, also microbial biomass. Don't know why not changing. Okay. In my country, Uzbekistan, major problem in the soil salinity. In the 54% is also salinity in the caused by salinity and the irrigated lands of Uzbekistan. Mostly this such a region in the Khorazm, Bukhara, Sirdaryo, Jizak region. And in the first time, we also cultivated in the
Is it working? Yes, ma'am, it was working. Now it stopped. Ma'am, it's working now. Okay. In the first time we cultivated in the plants in the dried bottom area. In the because this in the Uzbekistan major problem in the salinity stress, this area also add in the for present in the soil salinated. In the effect of salinity on stress on plant growth, how this negative effect also the salinity also decreased in the plant growth yield, also decreased in the photosynthetic activity, decreased in the nutritional status of plant, also decreased rate of seed germination. In the objectives of this study to study the effect of biochar on the growth of alfalfa amaranth in the maize, to analyze the effect of biochar root morphological traits in the plant, to indicate the effect of biochar on physiological traits in plant, to study the effect of biochar on soil nutrients enzyme activities. In our experiment, we use it in the biochar, the municipal salt was the biochar. This is also prepared in the limit in the oxygen at 500 grados and for 40 minutes. In the here in the municipal solid waste biochar properties are shown in the table, because in the biochar is also high rich organic carbon, organic matter, and also total nitrogen, total phosphorus, total potassium, and also including this less amount is zinc, iron, and micronutrients. In the Aral Sea, Aral Sea, centers of the right, the bottom of Aral Sea, here showed this is in the very less, this is soil organic carbon, soil organic matter, and total nitrogen, total phosphorus, total potassium, very less. In the riot in the bottom Aral Sea is main problem here. Road stress also available. Salinity stress also had high temperature stress also available here. This current situation in Eastern Aral Sea area, because this in the around Aral Sea, dried bottom sand, where first time we cultivated in the here in the alfalfa, amaranth, and maize. Also, we use it in the biochar treatment. When this applied in the biochar treatment, also significantly enhanced in the plant head, shoot fresh weight, root fresh weight, alfalfa, amount in maize compared to control. We also investigated effect of biochar on root morphological traits of plants. When we use it in the biochar treatment, also significantly enhanced in the total root layers, in the root project area, root surface area, root volume, root diameter in the alfalfa compared to control. Also, similar results show that when this applied in the biochar to the amaranth in the maize plant, also beneficial effect when applied in the biochar treatment, also significantly enhanced in the total root linkage and the projected area root
Due to network issue, I think ma'am has left the meeting. We should wait for some time. Just a minute. Actually, there is temperature is -5 to 10 degree in Uzbekistan. So she's giving their presentation from home, and at home some. Ma'am has connected. Yes, yes, Sorry, yes. yeah, internet is problem. I Yeah, don't ma'am. know. We can understand. Sorry No for problem. that. Please Yeah. continue. Okay. In here, biochar treatment also significantly enhance the chlorophyll A in alfalfa plant. Also, when this applied biochar treatment also significantly enhanced chlorophyll amaranth and also maize compared to control. Also, similar results showed that chlorophyll B, when this applied in the biochar treatment to alfalfa, amaranth, maize, and also beneficial effect in the biochar treatment, also significantly enhanced in the chlorophyll B content in alfalfa, amaranth, maize levels. When we analyzing in the total chlorophyll content, also when this applied biochar treatment in the positive in the result show that significantly enhanced in the total chlorophyll content in the alfalfa, amaranth, maize plant compared to control. Also, this figure also showed that when this applied in the biochar treatment, also significantly enhanced in the carotenoid content in alfalfa, amaranth, maize plant compared to without biochar treatment. And also, we also analyzing in the relative water content because this area is this dried area. When this applied biochar treatment, also significantly improved in the alfalfa, amaranth, maize relative water content. Biochar also in the beneficial effect water holding capacity in the soil. We also investigated the impact of biochar on soil nutrients under salt stress condition. In the biochar treatment, after we harvesting in the plant, we also analyzing in the soil nutrients. In the biochar treatment, also beneficial effect soil nutrients such as nitrogen, phosphorus, potassium, humus content compared to in the without biochar treatment. Also, a beneficial effect. Also, this in the when we harvested in the amaranth and maize plants in the biochar treatment, most significantly enhanced in the soil nutrients, nitrogen, phosphorus, potassium, humus content after harvested amaranth and maize plant compared to without biochar treatment. When this applied in the biochar fertilizer, also a beneficial effect, also soil enzyme activities. Biochar treatment also after harvested alfalfa, amaranth, maize plant, also beneficial effect in the catalase, invertase, and urease enzyme activities compared to without biochar treatment. In the we also this analyzing in the heat map Pearson correlation test. Here in the show that in the blue color indicated that in the positive correlation, and red color also this negative correlation. In the most of these photosynthetic activities such photosynthetic pigments such as in the chlorophyll A, chlorophyll B, total chlorophyll content, also positive correlation in the enzyme activities such as catalase, invertase, urease enzyme activities, also humus content.
In the first time we cultivated in the Uzbekistan in the amaranth, alfalfa, in the maize, dried also salinated area in the Aral Sea. When this applied in the biochar treatment, also beneficial effect in the these plants root morphological traits significantly improved in the plant growth parameters. Sorry for that again, this problem, internet. It's okay, ma'am. Also, we also use it in the biochar treatment in the 1% and 2-3% biochar, also ginger, and also in the basil medicinal plants. When this applied in the biochar 1% and 2%, also 3% also beneficial effect in the germination of basil plant. And when this applied in the biochar 3 and biochar 2% also significantly enhanced in the plant growth parameters such as plant height, leaf length, leaf number, leaf years in the basil compared to without biochar treatment. Also in the biochar levels such as in the 2%, 3% biochar also significantly enhanced in the root fresh weight, shoot fresh weight, root dry weight in the basil plant. Also with this applied in the biochar treatment, biochar also significantly enhanced in the root morphological traits, also transfer in the soil nutrients. When this applied in the biochar 2%, 3% biochar also significantly enhanced in the total root length, total root surface area, project area, root diameter, root volume compared to control treatment. And also similarly result showed that in the biochar 2% and 3% biochar also significantly enhanced in the chlorophyll content in the basil plant. When this applied in the biochar levels in the 1% and 2-3% biochar also significantly enhanced in the total flavonoid content in the basil plant. Also similar results showed that in the biochar levels in the 2% and 3% biochar also significantly enhanced in the total sugar content in the basil plant. Also this when this applied in the biochar treatment, 1% and 2% biochar also improved in the soil enzyme activities, but compared to in the control and also compared to biochar 1 to 3% 2% biochar, beneficial effect in the biochar 3% also significantly enhanced in the
acid phosphomonoesterase and alkaline phosphomonoesterase, fluorescent acid enzyme activity, and also phenol oxidase enzyme activities compared to without HR treatment. We also similarly use it in the this experiment in the this is biochar also this prolysing in the 450 grados in the bleacher wood and this biochar soil properties in biochar and also soil properties also showed here in the characteristics, because in the biochar also this high rich in the soil nutrients and including nutrients and micro and micronutrients, mostly in the high rich in the organic carbon. When this in the organic carbon also this improve in the soil in the soil fertilizer, also humus in the soil organic carbon, and positive in the correlation in the organic matter in the also soil humus content. Also this biochar treatment also studied in the effect of biochar and the germination of ginger plant. When this applied in the biochar treatment in the 2%, 3% biochar also improved in the germination in the ginger plant in the mostly this at 11 and 14 days. This control also showed that, but this result showed Due to network issues from ma'am side, we stop. We would like to stop this session here. sorry for that. This is problem internet. Maybe better next time doing. Yes, ma'am. Should we Definitely, continue ma'am. it? Should we continue in some next days, ma'am? Okay. Because this internet is a very big problem this time. I don't know. After 5 minutes also stop it. Yes, ma'am. Okay. Yeah. Do you have any question about in the biochar? We also use it in the biochar and also arbus gamma fungi, because this internet is problem. I think no question, ma'am. Okay. Sorry for that. Sometime like that technical Yes, ma'am. issue. No problem, ma'am. Yeah. Okay, thank you Thank you so for this much, ma'am. workshop. Thank you, Still, ma'am. with network issue, you explained it very well, ma'am.
Thank you so much for delighting us with importance of biochar or its effect on maize, amaranthus, alfalfa, and ginger. Thank you so much, ma'am. Thank you, all of you. I'm certain that participants have gained immense knowledge about biochar and its effect on alfalfa, amaranth, and maize. Thanks to your extensive expertise, we deeply appreciate your generosity in sharing your profound knowledge with us and wish you continued success in all your path. Thank you so much, ma'am. And as we conclude tonight's program, I would like to express my heartfelt gratitude to esteemed partners. And as we all know, tomorrow is Makar Sankranti, and there will be holiday on this occasion. So, and ma'am's lecture will be continued on in some next days. At the end, we extend our best wishes. We will inform for ma'am's lecture, no problem. I also thank all our participants for their attentiveness and active engagement throughout the sessions, even though we face some technical issue. Thank you for your understanding. And on behalf of Vital Biotech, the Agriculture Forum for Technical Education of Farming Society, Kota, Indira Gandhi Krishi Vishwavidyalaya, Raipur, the University of Agricultural Sciences, Raichur, Karnataka, Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya, Bilaspur, Chhattisgarh, Farmers Park, Hyderabad, Telangana, and the entire organizing team, I deliver my heartfelt gratitude to our esteemed guests, distinguished speakers, and enthusiastic participants for joining this session. Your patience, active engagement, and attentiveness throughout the program have been truly admirable. Thank you once again for your invaluable contribution. Have a delightful evening.